Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel, The United Road. We are off and running in the Champions League, guys. Kal raat. If you are a United fan, you went through every emotion. ठीक है, खुशी का ठिकाना नहीं तो बिल्कुल ही डिप्रेशन वाला माहौल in the last 50-40 seconds, and then again over the moon. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हम बहुत अच्छा खेले, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई वी वेर गिविंग आउट वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस. वी गॉट ओवर द लाइन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. And sometimes all you have to do is get those 3 points on the board. So that's what I said. We are off and running in the Champions League. ठीक है, हम जीत गए भाई, बाकी क्या कर रहा मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता. Honestly speaking, being brutally honest, because हमें अपना देखना है. We will talk about the game in detail. थोड़ा सा मेसन माउंट सिचुएशन पे वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक बिकॉज थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा. आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन एज वेल. ठीक है, कि व्हाट डू यू गाइस थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन विथ मेसन माउंट, बिकॉज इन द समर looked like he was one player that the manager wanted very badly, and all of a sudden I can understand the Scott McTominay experiment. But if you have someone like Mason Mount, if you have someone like Eriksen, I think they should be starting. So इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे. We also have few of the Champions League games kicking off in 10 minutes time as well. ठीक है, so वो ज्यादा दूर भी नहीं है. So थोड़ा बहुत while we talk we will also keep an eye on the game. Shai bhai, welcome to the stream. No matter how we played, यार देखो वही वाली बात है, as I said, beggars cannot be choosers. Where you are struggling to find goals, Premier League में our 3 forwards they have 1 goal. So at this point of time we cannot just go out and say अरे भाई हमें 5 मार देने थे, 4 मार देने थे. Obviously as a team we want to go out and score, so बिल्कुल भाई. I think till 70 minutes we were absolutely disastrous. ठीक है, we did create few chances here and there, but Copenhagen के against अगर 70 मिनट में यार if you have like what 2 shots on target, that means you are playing lethargic, pathetic. Yeah, word I will use. 3 points in true United fashion, 100%. That we can definitely say. Nothing comes easy when it comes to United, man. Nothing comes easy. So, as Celia said, first half was absolute disaster. Absolute disaster. Bhai, Maxos, or Maxos not saving our ass. Maxos was absolutely invisible in yesterday's game. The only moment he was visible was when he gave away that penalty. Okay? So as I said, he can be a good option coming from the bench, जहाँ पे भाई in the long, when you hit those long balls और उसके बाद वहाँ पे he can make those runs. But when you have someone like Mason Mount, if you have someone like Eriksen that you can play, then playing someone like McTominay for me makes no sense. Although he has scored 3 goals, but that's what I feel. I don't think so. And that even if that is a pressure, then you cannot get rid of that pressure by sitting on the bench. That's what I feel. So if you have a player, if you have paid so much money, you have to play him. If it's not working, then it's a totally other thing. By the way, we have played in the last 3 games, minimum 4. Being honest, minimum 4. But then we have seen, United basically showing signs, when we don't actually expect it. Last year, Derby Pay, when we had them at Old Trafford, no one was expecting us to beat them. But we ended up winning. So मैं वही बोल रहा हूँ कि at this point of time, which United will show up, Pulkit bhai, that depends. The way we are playing in the last 3 games, then we will be hammered. In simple words, 4 goal minimum. Hello, Ravi bhai. Yeah, we can all have conspiracy theories because at this point of time, we don't know what's actually happening. That's what I say. That's what I'm saying.
भाई मैं वही बोल रहा हूँ, that's where I have the problem as well. Because I'm all okay with giving a player a certain number of games यार, एक certain number तक खिला सकते हो, but when you have options and you still keep playing the player that he is not performing, मेरे ऊपर से जा रही है भाई. He is the same guy who benched Ronaldo, who benched Maguire, and now that all of a sudden it's one player that he actually brought to the club, उसको बिठाने की बात है तो भाई इसकी गांड फट रही है. So I am not liking it, honestly speaking. चलो भाई देखते हैं. अरे भाई ग्रावनबर्ग ने कुछ नहीं उखाड़ना जिंदगी में. लोन के बाद बायर्न, लोन के बाद इसको रखेंगे नहीं रखेंगे, ठीक है. ग्रावनबर्ग ने कोई तीर नहीं मारा है, और ग्रावनबर्ग इज नॉट अ चीप साइनिंग, वो भी 40 मिलियन की साइनिंग है, ठीक है. सो ग्रावनबर्ग टाइप नहीं चाहिए था हमें, फ्रैंकी डियोंग टाइप. बट लेट्स सी लॉन्ग रन में व्हाट वी डू विथ मेसन माउंट. भाई as I said, till the time Maguire faces physicality, it's not a problem for him. If Maguire faces a team which is not pressing Maguire will be fine. Maguire's problem gets in, you know his anxiety gets in when he has 2 or 3 players pressing the ball. भाई ग्रावनबर्ग तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. You can talk about Frankie de Jong, someone like Enzo Lefe. ये बंदे बोलोगे तो मुझे समझ में आता है. ग्रावनबर्ग टाइप का एग्जांपल मुझे नहीं समझ में आया मेरे भाई. गुड इवनिंग भाई. तो वही है. तो मेसन माउंट का यार क्या चल रहा है, बिकॉज इन सोशल मीडिया देयर इज नथिंग अबाउट मेसन माउंट, देयर इज नथिंग अबाउट हिम नॉट ट्रेनिंग वेल, और नॉट लिसनिंग टू द मैनेजर. सो ये सारी चीजें अभी है नहीं. So it's very hard to predict what's going on behind the scenes, because I was definitely a bit surprised. Simple. Bhai, that's why, as I said, someone like, Mason Mount, if you are looking to play him in that role, you will have to give him a number of games. You cannot just expect him to get into that role from game one and do the things that you want him to do. So I don't understand. Like, as I said, I totally get McTominay scoring 3 goals in 2 games, but I don't think he deserved a start against Copenhagen. Look at the way the game changed when Eriksen got in. I don't understand why we had to play 2 defensive-minded players like Amrabat, and obviously we played McTominay in a further role where he played for Scotland, but that totally backfired. So I think the experiment with McTominay should end. Obviously, next game is City, he won't play. Casemiro will be there, and I think alongside him, we might see Eriksen, we might even see Mount, we might even see Amrabat. So let's see. Bakwas. Absolute garbage. So ये सब मत पढ़ा करो यार. ये सब seriously. Karan bhai, if you listen to the English media, you will be like, भाई क्या चल रहा है ये? What's going on? Because they have no clue. They have no clue. They just write everything for clicks. Apart from Onstein or 1 or 2 journalists that you can say, they just write all kind of rubbish just to get the clicks. उनको clicks मिल जाए यार, उनको उनसे उसके अलावा उनसे फर्क ही नहीं पड़ता उनको. इंद्रजीत भाई, that's an absolute fact. ठीक है, that's an absolute fact. इस पे कोई डिबेट भी नहीं कर रहा यार. We have gone over the line in the last 3 games, but we know if we play like this against City, we'll be hammered. Simple. Hello Jan bhai, welcome to the stream. I think we are going to 4 midfielders. Mere bhai, I don't think so. Honestly, I don't think so. I think Anthony will again start, because he will do the defensive duty. He will keep on helping the right hand side, the right back. Okay, Dalot will need help against City, so Anthony will start. In my opinion, I don't see 4 midfielders playing. I see 3. 100%. Hello Ayush bhai.
मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, आवर मिडफील्ड इज एब्सोल्युटली ओपन, एब्सोल्युटली ओपन। मतलब क्या ही बोलूं मैं, घर वाले देख रहे हैं, वरना मैं एक बहुत ही अजब अलग तरीके वाला एग्जाम्पल देता। बस भाई ऐसे ही चलता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। वो रेफरी को रोकना था। Ali, welcome to the stream. Praful bhai, welcome. Ayush bhai, shukriya. Much needed win here. Much needed win. You know, a point at home against Copenhagen would have been, in my opinion, a nail in the coffin. I won't have said final nail in the coffin, but a nail in the coffin. So at least, as I said, एक चीज ये है कि भाई now we are not on zero. Zero was looking very bad. But now we have 3 points, and we can definitely say that okay, we are going to Copenhagen next. We get that, win. We get to that second spot, because I do feel that Galatasaray will again lose the next game against Bayern Munich. As I said, I will play him here. He has played on the right hand side, and his crossing is 100 times better than Anthony at this point of time. If it's not working, then try something different. You are sticking to just one guy who's giving you nothing apart from that he can help the defender. भाई कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी थोड़ा रस्टी लगा है मेरे को, थोड़ा रस्टी लगा है, बिकॉज ही वाज वेरी वेरी गुड अगेंस्ट शेफील्ड, एब्सोल्युटली क्लास, बट लास्ट गेम against Copenhagen, he was not up to the mark. So I think he's still getting into that zone, you know. But as I said, अभी 4 गेम खेला है यार, जिसमें से 2 गेम्स he has played as a left back. So 2 गेम में जज कर देना एक बंदे को, I'm not buying that, to be honest. I will start Mount as well, Ali. If not on the right hand side, then definitely in the midfield, because he's a workhorse. That we all know. He will keep on working hard. He will keep on getting the support, giving the support to everybody. It's as simple as that. So I am totally in favor of, manager trying to do certain things in certain games, but I don't want that. I don't want experiments in games where points are on the line and where we can be out of the tournament. Simple. Exactly. Sanket bhai, pata nahi, there is some problem with YouTube yaar. Lot of people, you know they don't get the notification. Lot of people, they don't get their membership renewed. I don't know what's the problem. Eriksen Amrabat case चलेगा भाई, मेरे को चलेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को चलेगा। बट कैसे करोगे? राइट हैंड साइड पे तुमने माउंट खिलाया, मिडफील्ड में भाई एरिक्सन, आमराबाट और केस, ठीक है, तो ब्रूनो कहां जाएगा भाई? Realistic expectation is don't lose by more than 3 goals. That's my realistic expectation. I don't want to sound deluded the way we are playing. As I said, which United will show up, we don't know. भाई नहीं करता वो बंदा क्रॉस। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। हमारे विंगर भाई रैशफोर्ड वाज क्रॉसिंग, ठीक है, वो पहला पास जिसमें हॉलैंड, उसके बाद तो चलो एवरीवन वाज नॉट अप टू द मार्क, but at least I see Rashford trying to cross. It's working, it's not working, I'm not talking about that. But yeah, Anthony is not even trying to cross. What should I say? Sorry, as I said, it's YouTube that is absolutely. Ali, to be very honest, I don't see that happening. But as I said, which United will show up, that's to be seen. Bhai, lot of players in the past, they have played with one foot. But then you will have to surprise. You will have to do something. You will have to take on. If you just stand at one, in one place and expect that things will magically happen, it's not going to happen.
एग्जैक्टली भाई, ही डजंट इवन नो वेयर ही शुड बी इन द गेम. उसको भाई खिला दिया पीछे. मैकटोमिने इज प्लेइंग एज अ नंबर 10 विदाउट एनी क्लू. भाई एक चीज बोलूंगा, बोलना बहुत आसान है ये चीज, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज डेड बिकॉज ऑफ रैशफोर्ड. ठीक है, यू डोंट हैव अ सपोर्टिंग कास्ट. एक विंगर को सपोर्टिंग कास्ट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, अनलेस यू आर अ टोटल वर्ल्ड बीटर यार, मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के हो, तब भी यू विल नीड हेल्प. You know, I am not in favor of Rashford playing for 85-90 minutes, but Garnacho, we have all seen, even in the last game. Even he is very raw. 20-25 minutes for him, for me, makes all the sense. Hello, hello Suraj bhai, welcome to the stream. Why? I don't think so. I don't think so. As I said, I will be worried if he is not playing, in the next 2-3 games. Then I will be worried. That what are we trying to do? Exactly, bhai. I am saying Rashford needs to up his game. I am in favor of dropping Rashford after 60 minutes, after 45 minutes if possible, if he is not performing. I am not in favor of just hoping for a moment for 90 minutes. But yeah, Garnacho, he has started in the beginning of the season. Yeah, he is not ready. He is a defender's nightmare for the last 25 minutes. That's it. By missing Shaw, he was missing Reguilon as well, because we all know Lindelof cannot do a job as a left back. This is my only hope, Ali. Fingers crossed. Absolutely, Suraj bhai. I don't know why he was on the bench, honestly speaking. भाई अपने अपने व्यूज है यार, ठीक है. यू नो, मोहक के अपने व्यूज है, मेरे अपने व्यूज है. एंड एज आई सेड, लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस दे हैव डिफरेंट व्यूज, सो दैट्स फाइन. वो अपने हिसाब से बोल रहा है भाई. ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट ही फील्स. ठीक है, आई टॉक अबाउट व्हाट आई फील. सो वही वाला सीन है भाई. मैं वही बोल रहा हूं, आवर विंगर्स दे नीड दैट ओवरलैपिंग रन. वी नीड दैट ओवरलैपिंग रन, चाहे वो डलो हो, चाहे वो तुम्हारा लिंडल, ये क्या बोलते हैं, रेगुलियन हो, या फिर शॉ हो. शॉ जब होता है तो भाई वी सी अ टोटली डिफरेंट गेम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. नहीं भाई, रैशफोर्ड इज नॉट अ राइट. ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट और जस्ट पुट हिम ऑन द बेंच. बिल्कुल, ही इज नॉट टेकिंग दैट रिस्क. एग्जैक्टली भाई. भाई व्हेन एवरीबॉडी इज फिट, you just don't beat, City. You just don't beat Barcelona, in a season with playing shit football. Last season we could see the improvement because we had a center back and we had a left back who could progress the ball. At this point of time, both are injured. भाई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा. The obsession with Anthony, I am not able to understand. I totally get that he is his player. He got him to the club. We paid money for him. But obsession, I am not able to understand. Simple as that. That's where my problem is. You play, yaar. You play. You give a player certain number of games. But when you have options available where you can try other people, then take that option. Don't just be stuck to one guy. दिक्कत वो है. मुझे ये दिक्कत नहीं है कि भाई तुमने किसी को 5 गेम खिलाया, 10 गेम खिलाया, ठीक है यार. Player needs the time. But if you just keep on playing him while other players sit on the bench without even getting a try, that's where the frustration gets in. In certain games, I can understand why we need to play Anthony. He is one guy who do his defensive job absolutely fabulously. He will always track back. He will always help the defender. And I admire that about him. I absolutely do. But if you keep on playing him just because he can defend, I am not buying that, honestly. भाई देखो, अभी मिडफील्ड में वी आर नॉट गोइंग टू मेक चेंजेस. Honestly speaking, we are linked with lot of
defenders, we are not linked with midfielders. Midfield mein, in my opinion, what our plan is to make Kobe Manu a long-term solution. Okay, long-term solution. So Kobe Manu will be a long-term part. I think we will start looking for midfielders if we try to offload Casemiro. Then I think we will try to offload. Till that point of time, I think we don't have, at this point of time, any plan. No, he's on the left, which is fine here. Which is fine. He has always played. He can play on the right, but he has always played on the left, and that's fine. हमारे पास right के बंदे हैं यार. Why to play people out of position when you have players available? अरे भाई, that's because we have fullbacks who are incompetent. बात समझो. Not 60 million talent, Suraj bhai. Sorry to say. And listen to Ali guys, as I said, check with YouTube. एक बार जो है नोटिफिकेशन ऑफ करके वापस ऑन कर लो. That always works. Why he needs to start passing just to keep the guys guessing. That's what I feel. अरे भाई, वो बंदा अभी 45 मिनट अंडर 19 के लिए नहीं खेल पाया. You know, he was substituted after 45 minutes, if I'm not wrong. उसको तुम सिटी के अगेंस्ट खिलाओगे, the guy who has not even kicked the ball for the last 3 months. भाई संडे का तो मैं सोच ही नहीं रहा. I'm not even thinking about Sunday. भाई, as I said, Varane and Casemiro, if they are going out next season to Saudi, I think we can make good money. That's what I feel. अरे भाई, फेवरेटिज्म तो बेंच क्या, इसका गेम टाइम कम हो गया भाई. गेम टाइम कम हो गया. ऑलरेडी ही इज प्लेइंग लाइक व्हाट 60 मिनट्स. पिछले 2 गेम में 60 खेला है. पिछले वाले गेम में व्हाट ही प्लेड द एंटायर गेम. बट उसके पहले 2 गेम से 60 खेल रहा है. फेवरेटिज्म तो है यार. एवरी मैनेजर दे हैव देयर फेवरेट्स. बट देन कुछ बंदे अपना एक लेके आए क्रेडिबिलिटी. कुछ बंदे बिना क्रेडिबिलिटी के खेल रहे हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. अरे भाई, प्री सीजन छोड़ दो यार. प्री सीजन में एंड्रेस परेरा यूज्ड टू प्ले लाइक पर्लो. जैसे ही सीजन शुरू होता था उसकी गांड फट जाती थी. So don't compare pre-season with normal season. Pre-season is fun. Pre-season is about fitness. No one takes pre-season seriously apart from Arsenal fans. भाई, अब ये कैप्टन है वो, I don't think he will be benched. But हाँ, he should be substituted when he is not having a good game. Simple. तुम्हारे पास अगर ऑप्शन नहीं है, I can understand. Ole did not used to have options. उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता था भाई. You have the option. Nah, I don't think so. I totally get behind the 30 goals that he got last season, but just on that basis, you cannot keep on starting him in every game. Simple as that. भाई, I think we have taken obligation to buy, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. There is nothing you can do about it. Whether he plays well, whether he absolutely fucks it up. So, भाई, that's what I'm saying. Every manager, they have their favorites. Every manager. But then you have to understand that if it's not working, you should definitely try certain new, some new players. Simple as that. भाई देखो, वही वाली बात है. Even with Salah having a stinker, he doesn't get dropped. वही वाली बात है. Few players they have earned for United after the last season. Rashford को बोल सकते हो, he had earned, even though in the last 2 games, apart from the Copenhagen game, he has been substituted for around 60-minute mark. But वही मैं बोल रहा हूँ, as a manager you have to put that fear in everybody's mind that if you are not doing well, you will be benched. Simple as that. It's as simple as that. It's not even a joke. Whether it's Rashford, whether it's Anthony, whoever it is,
When you can put someone like Maguire and Ronaldo on the bench after a few bad performances, then you can do it for Rashford and Anthony as well. हेलो भाई, अरे रहन दो भाई, रहन दो. जब स्क्वाड होता है ना, जब स्क्वाड होता है जहां पे 100 मिलियन के प्लेयर बेंच पे बैठे हों, तो वहां पे फेवरेटिज्म की बात बनती ही नहीं है फिर. ठीक है, तो जब वैसा स्क्वाड हो जाएगा ना, तो हमारा मैनेजर भी बोलेगा यार कोई फेवरेटिज्म की बात नहीं है. अच्छा रैशफोर्ड नहीं खेल रहा, ठीक है भाई, बेंच से उठा के ले आओ किसी को. उनके ऑप्शंस देखो और हमारे ऑप्शंस देखो. वी एक्चुअली हैव 2 18-year-olds, दो 9, एक 19 एक 20 ऑन द बेंच. ठीक है, for 2 wings. They are our options. The talent is there, but are they proven? No, they are not. By every win, I will celebrate like animal. Simple as that. Those who want to say that, oh, why you are celebrating that win like that? I will always celebrate a United win, and nobody can stop me from doing it. भाई मैं वही बोल रहा हूँ, it's totally okay to just have one foot, but common sense कहाँ है भाई? Where is the common sense? It's one thing that you wanna do certain things. If it's not working, try something else. Problem क्या है? Your shots are not working, try to pass the ball. But नहीं, मैं नहीं करूंगा. मेरे को हीरो बनना है. I will take a shot from 30 yard और बॉल ब्राजील मार दूंगा. डिसीजन मेकिंग कहाँ है? मेरे को समझ में नहीं आता भाई. ये कौन से नशे करके दे गो ऑन टू द पिच. पता है स्ट्राइकर है, पता है दूसरे बंदे आ रहे हैं, भाई क्रॉस कर ले, पास कर ले. बट नहीं, ये जॉनी लिवर वाला मीम जो नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, वही वाला सीन चल रहा है यहाँ पे. साला पास ही नहीं करना. या तो तुम भाई आर्यन रॉबिन बन जाओ, रिबरी बन जाओ, वेर यू टेक अ शॉट टॉप कॉर्नर बूम, कि भाई तुम लेफ्ट फुट से कट करके अंदर आए एंड यू टेक दैट शॉट. सबको पता है कि भाई इट्स गोइंग इन. या तो तुम उस लेवल के बन जाओ, या तो पास करना सीख लो. यू कैन नॉट बी इन बिटवीन, कि जहां पे तुमसे ना तो वो हो रहा है ना तुमसे पास हो रहा है. फिर कर क्या रहे हो यार? ट्रेनिंग में खाली स्पिन मारते हो क्या? अरे भाई वो 18 का है, 19 का है वो, ठीक है. विंगर्स का डिसीजन मेकिंग एट टाइम्स बैड बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू स्कोर एंड दे ऑल्सो वांट टू गेट द क्रेडिट्स. फाइन, बट एंटनी यार भाई तू तो ब्राजील के लिए रेगुलर है. You are almost in your 4th or 5th year as a professional footballer at the top level. हर किसी, मैं वही बोल रहा हूं, हर किसी का प्रॉब्लम है. बट मैं एक चीज एंटनी से फ्रस्ट्रेशन इसलिए है यार, बिकॉज ही डज एवरीथिंग राइट. ठीक है, ही इज इन द ऑपोजिशन हाफ. ठीक है, ही इज हगिंग द कॉर्नर, बट वहां से कुछ आउटपुट ही नहीं है. एवरीबडी नोज ही विल आइदर लुक फॉर अ बैक पास और ही लुक फॉर द ओवरलैपिंग रन. ओवरलैपिंग रन आता ही नहीं है, वो खड़ा है बॉल लेके. टाइम्स फ्रस्ट्रेशन में आई कैन अंडरस्टैंड द शॉट, बट देन एज अ प्लेयर यू नीड टू इंप्रूव यार, कि तू जा और तू बॉल ट्राई कर देने का. वी हैव हिम पास द बॉल एट टाइम्स एंड दैट वर्क्स लाइक मैजिक, जहां पे लोग उससे एक्सपेक्ट नहीं करते पास करना. बट दैट नीड्स टू बी डन कंसिस्टेंटली. अमाद बिकेगा भाई, अमाद विल बी सोल्ड. अब उसके 10 मिलियन मिले, 15 मिलियन मिले, भगवान जाने, जाएगा वो. He will be sold. I don't see Ahmad as a player for United in the future. मुझे नहीं लगता. I might be wrong, but I think he will be loaned out first and then he will be sold. इस सीजन तो चलो कहीं नहीं जा रहा, he got injured.
but in my opinion he will be sold. For how much, that's to be seen. तो वही है, मुझे कुछ प्लेयर्स की ना एटीट्यूड से प्रॉब्लम है. इट यू कैन हैव अ बैड गेम. Not everyone is, Ronaldo or Messi, where they will have 99% of the good games. You can have a bad game. You can have 2, 3 bad games. But where is that mindset? Ball is in the air. Rashford is looking for the ball to drop. अबे 6 फीट की हाइट है तेरी, कूद ले थोड़ा. मैं नहीं कूदूंगा. मैं नहीं कूदूंगा. पेलेस्ट्री है भाई. पेलेस्ट्री है. मेसन माउंट कैन प्ले. ही हैज प्लेड. कोई प्रॉब्लम नहीं है. And I think he can be a very good, prospect on the right for us because of his crossing. सब बढ़िया भाई. भाई देखो, ये नहीं होने वाला बेंच. ठीक है, हमारे पास इसका बैकअप ही नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. हम कितना भी सर पकड़ ले, कितना भी रोध हो ले, हमारे पास ब्रूनो का बैकअप नहीं है. इट्स अ फैक्ट. भाई वी हैव बेनेट, वी हैव फिश, बट आई थिंक एक और लोन. आई थिंक दे नीड सम मोर टाइम टू गेट रेडी. आई थिंक दे बोथ ऑफ देम आर गुड प्रोस्पेक्ट्स. फिटनेस पे ठीक है, फिश का थोड़ा सा रहा है फिटनेस इशू, बट समवन लाइक बेनेट, ही इज डूइंग वेल. एंड दोनों बंदे जो हैं, आई थिंक इफ दे गेट अ चैंपियनशिप लोन, आई थिंक दैट वुड हेल्प देम अ लॉट, बिकॉज चैंपियनशिप में यू गेट ग्राइंडेड अ लॉट यार, अ लॉट. भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुझे ये समझ में नहीं आता. योर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर एट नंबर 10 कीप्स ऑन प्लेइंग आउट ऑफ द पोजीशन. तुमने मैकटोमिने को खिला दिया यार आगे, जस्ट बिकॉज ही प्लेड वेल फॉर स्कॉटलैंड. क्या लॉजिक है? मतलब अब नेशनल टीम के परफॉर्मेंस देख के प्लेयर सेलेक्ट होंगे? मैं तभी बोल रहा हूँ, एट टाइम्स आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. पोजीशन में गिला लो, वैसे ही आउट ऑफ पोजीशन खेलने वाले इतने बंदे हैं भाई. ये वैसे ही हमारे फिटनेस का इशू है. वी कीप प्लेइंग सेंटर बैक एज लेफ्ट बैक. जहां पे यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ इंजरीज, वहां तो खिलाओ बंदे को ढंग से. ही इज एन आउट प्रॉपर नंबर 10. वो नंबर 8 खेल रहा है यार, वो राइट पे खेल रहा है. सीबी तक खिला दिया उसको. कल को बोलेंगे यार ओनाना, अगर तेको नहीं खेलना तो चल ठीक है, ब्रूनो गोलकीपर. बायंडियर बैठा रह जाएगा फिर भी. भाई जस्ट केम बैक फ्रॉम इंजरी, सो 65 मिनट्स वाज अ गुड डिसीजन. ठीक है, लोग बोल रहे भाई 65 मिनट्स पे क्यों हटा दिया. अरे भाई उससे भागा नहीं जा रहा था. He was looking tired even after 45. We still kept him till 65. भाई because Eriksen was playing in the position that he likes to play. तुम ब्रूनो को कहीं पे भी डाल देते हो यार. I am not defending him. The game against Sheffield, Bruno was horrendous. That's the word I used for Bruno. Horrendous. Because he was playing his natural position. Kal again he was playing as number 8. अरे भाई he was homesick. Homesick बंदे नहीं रख सकते तुम टीम में. Simple as that. जिस बंदे को होम सिकनेस है, यू कैन नॉट प्ले हिम. इट्स अ फैक्ट. हाँ, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, द ब्लेम विल बी ऑन द मैनेजर. भाई एफए कप खेलेगा वो? बिकॉज आवर नेक्स्ट लीग कप गेम इज अगेंस्ट न्यूकासल. आई डोंट सी हिम प्लेइंग. भाई देखो, इंटेलिजेंस की बात करें तो भाई हिज क्रॉसिंग, हिज ट्राइंग टू इंप्रूव, बट हाँ, ओवरऑल ही कैन डू मच बेटर.
he has still a lot to improve in terms of his overall game. सिर्फ बॉल लेके भागने में नहीं, बॉल लेके भाग लेता है वो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट ओवरऑल he can definitely improve a lot. As I said, he has started crossing, but वो थोड़ा सा भाई इसको और उस चीज को improve करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्रॉसिंग रेगुलर चाहिए, रेगुलर. भाई तेरा या तो नेट स्लो है या तो कोई और प्रॉब्लम है. भाई वी कैन प्ले एरिक्सन एंड ब्रूनो. ठीक है, हम दोनों खिला सकते हैं. एरिक्सन इन अ डीपर रोल, ब्रूनो एज नंबर 10. ठीक है, दो नंबर 10 की बात नहीं कर रहा मैं. दिस वाज द मिडफील्ड दैट वर्क लाइक अ ट्रीट लास्ट सीजन. कर लो भाई. भाई मैं वही बोल रहा हूँ, you know, that's the biggest problem that I am seeing with, you know, look, seeing at our with our wingers. चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, टेक ऑन ही नहीं करना भाई, टेक ऑन ही नहीं करना. इट माइट बी बिकॉज यू नो दे आर ऑलवेज वरीड ऑफ लूजिंग द बॉल, एंड उसके बाद हमारे भाई पीछे फुल बैक जो है वो नल्ले हैं, दैट वी ऑल नो. बट हाँ, एंटनी एज आई सेड इज हिज डिसीजन मेकिंग. वो थोड़ा बहुत बॉल कट कटा के पहुंच भी जाता है इन ऑपोजिशन हाफ, देन ही इज एब्सोल्युटली searching for answers ki bhai what should I do next, what should I do next, what should I do next. Absolutely hopeless. हाँ भाई, अकेडमी वाला था. कुछ नहीं हो रहा सैक भाई, फालतू की बातें नहीं करता मैं सैक वैक की. मैं ये ट्विटर वालों की बात, मैं ये ट्विटर की बात जानने लगा ना, और सोशल मीडिया की. इनका बस चलेगा तो ये फिर हर हर गेम में ना नई प्लेइंग 11 खिलाएंगे. नो वन इज गोइंग टू रिप्लेस हिम, ही इज गोइंग टू स्टे. लिख लो मेरे से अभी, अभी लिखवा लो मेरे से. चलो. अरे भाई तो विंगर क्या करेगा, विंगर क्या करेगा, सामने वाले को मुक्का मार देगा क्या? विंगर का काम क्या है? रन विद द बॉल, ड्रिबल, टेक अ शॉट if you have the opportunity, or pass. Passing, he's getting into the game because he never played with strikers. I can still improve. He can do much more with the take-ons. Take-ons वो और ले सकता है, बट विंगर से क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई, कि सामने पैर चला दे, जूता खोल दे, सर पे मार दे, कटिंग करके शॉट लेता है और भागता है. रॉबिन क्या करता था? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. रॉबिन क्या करता था? जो चीज आती है उसी को परफेक्शन के साथ करो, बट वो चीज अभी नहीं हो पा रही उससे. वो फाइनल आउटपुट इट्स नॉट देयर, एंड दैट्स व्हाई इट्स फ्रस्ट्रेटिंग. व्हेन इट वर्क्स लाइक अ ट्रीट. व्हेन इट डजंट वर्क. ये प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर. सिर्फ बॉल लेके भागना है और उसके बाद फिर अंदर वही वाली बात है, ओवरलैपिंग रन अभी है नहीं. एंड ही गेट्स मैन मार्क्ड बाय 2 guys, at times even 3 guys, because they know पीछे से कोई बंदा आगे आएगा ही नहीं. They are happy. In the last game, just one overlapping run by Regulion. One overlapping run where he made the cross and McTominay headed the ball over the bar. That was the only run that he got in the game. भाई there is nothing called eriktenhag ball और ये फलाना, ये मेरे को ना नल्लो वाली बातें लगती है मेरे भाई. These are the terms used by so called analysts, जो अपने आप को एनालिस्ट मान लेते हैं खुद से ही, सेल्फ प्रोक्लेम्ड. 5 गेम देख के ट्विटर बायो में लिख दिया आई एम एन एनालिस्ट. Any manager cannot play his proper football if his main defensive line is gone. Playing left back, playing center back or Sediev as left back, he is making mistakes with his positioning of the players. But then obviously what we saw last season, 2 of the main cog of that team, Shaw and as well as Martinez, both are out. भगवान जाने क्या बोलता है भाई. एग्जैक्टली भाई देखो, ये सीजन में भाई कमाल भाई, वन थिंग, इन दिस सीजन
he has not even played with his playing 11 for 3 games in a row. 3 गेम नहीं खेला है वो साथ में अपनी प्लेइंग 11 के साथ. ऑलवेज देयर इज अ इंजरी, ऑलवेज. अरे मैं छोड़ो यार, मैं तो अपना गाली भी नहीं वेस्ट करूंगा इसके ऊपर. भाई कोई सॉल्यूशन है ही नहीं. प्लेयर्स नीड टू इंप्रूव. अरे यार ये सेम प्लेयर्स हैं, ठीक है. यू विल सैक टेन हाग, ठीक है. टेन हाग सैक करोगे, दे विल बी स्टिल बी देयर एट द क्लब. सॉल्यूशन यही है कि भाई द प्लेयर नीड्स टू रेज देयर गेम. भाई देखो, आई थिंक द ओनली रीजन वी डिड दैट बिकॉज हमें पता था भाई वी आर गोइंग टू कीप मेजॉरिटी ऑफ द बॉल इन द सेकेंड हाफ, ठीक है. Majority of the ball with the second half, and we needed that goal scoring ability from McTominay that he brings in. It was not about defense in the second half. It was all about try to keep on attacking, and that's why we made that decision. Garnacho start करने लायक है ही नहीं है. Even in the last 25 minutes yesterday, he was absolutely rubbish. The biggest contribution by Garnacho in yesterday's game was fluffing that penalty line. भाई मैं भी वही बोल रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग कि भाई किसी को क्रिटिसाइज मत करो. प्लेयर लाइक रैशफोर्ड 6 फीट हाइट, इफ यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू गेट द एरियल बॉल, भाई तू क्या कर रहा है यार. यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योरसेल्फ बाय नॉट इवन ट्राइंग. भाई गुड नाइट भाई. भाई आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ थ्री, ठीक है. बट you cannot put this just on भाई कि भाई हमें सीजन में इतने गेम खेलने पड़ रहे हैं, ठीक है. प्रोफेशनल फुटबॉलर्स and they are getting rest here. I'm not saying that everybody is getting rest, and I think we have the depth. Now it's on the manager whether he can utilize that depth in certain games. I'm not saying in every game, in certain games. अरे भाई हर बंदा करता है अपने टीम का. कमाल भाई, every player in our team loses the ball, and that's the problem. बिल्कुल कोई फन नहीं है भाई, कोई फन नहीं है भाई. आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम. मैं वही बोल रहा हूँ, सर्टेन प्लेयर नीड रन ऑफ गेम्स. ओनाना ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में ही बिल्कुल रबिश हो गया, ठीक है. हेलो शिराज भाई. भाई मैन सिटी मिडफील्ड, आई थिंक Casemiro will start. I think on the right hand side Anthony will start. भाई सीजन का प्रेडिक्शन यही है, अगले साल चैंपियंस लीग खेल ले, दैट्स इट. इफ वी गेट अ गुड रन इन FA कप और Carabao कप, that might be it. It is good enough. In certain games you can play, Casemiro. In certain games you can play Amrabat, ठीक है. माउंट ब्रूनो की जगह पे तुम एरिक्सन खिला सकते हो कुछ गेम्स में. You have the options, you have to utilize. You cannot be stubborn. You cannot be stubborn. That's what I'm saying. अरे रबिश है भाई, absolutely rubbish. I don't see both of them playing here. I will be surprised if both of them start. Now that Amrabat was hauled off after 45 minutes, तो देखना पड़ेगा whether he goes with an attacking mindset, because going with an attacking mindset with the way we are playing right now, we will be taken to the cleaners. But if they are playing, I have no issues. I just don't want to see McTominay to start the game. Fabulous save. I think even at League One team
will press more than us. We just don't press. We just don't press. Our press is not even half-hearted. It's so rubbish. Sorry to say, but that's a fact. People who are saying that we have a pressing game, why we don't press? We just don't do it at all. Fair enough. भाई एक गोल मार देते हैं वो भी भाई देन वी आर नॉट एबल टू डिफेंड प्रॉपरली. ठीक है. यार देखो वही वाली बात है ना यार. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. इवन इन द लास्ट गेम, we had so many chances. Yeah, the chance creation is not a problem. Finishing the chances is a problem for whatever reason it is. भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, it will be a nightmare. You know, it will be a nightmare. But it is what it is. But चलो यार, on this note, I will be finishing the stream. ठीक है, कल मिलते हैं. Hopefully कुछ better news मिले यार regarding injuries as well. Stay safe, and we all know Derby is Sunday यार. And honestly speaking, I don't want to sound deluded or negative, but if someone give me a point right now for the Derby, I will take it and run. Our entire team is sleepy. Why are you talking about defense? Our midfield is sleepy. Our attacking players are sleepy. Everybody is sleepy. Unfortunately, that's like the club is sleeping as a whole at this point of time. Good night, guys. Thanks a lot for joining in. Stay safe.